Good morning, students. Welcome all. So, how are you, students? I hope all of you are well at home. So, the next chapter is your types of software. So, in this chapter, we will discuss about types of software, that is your system software and application softwares. So, सबसे पहले है what is a software. सो आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। सबसे पहले है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, that is the component that you can touch and feel, like your input devices, output devices, CPU, floppy disk, hard disk, CDs. All these are the hardwares. Next one is your software. Software represent the set of programs that governs the operations of the computer system and makes the hardware run. बेटा कंप्यूटर सिस्टम आपको पता है कि दो सिस्टम से बना होता है, वन इज़ योर हार्डवेयर एंड अदर वन इज़ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो फिजिकल पार्ट है जिसको आप टच कर सकते हैं, डैट इज़ कॉल्ड द हार्डवेयर, एंड सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, जिन प्रोग्राम्स की हेल्प से वी कैन गवर्न द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक योर हार्डवेयर रन, डैट इज़ कॉल्ड द सॉफ्टवेयर. So software can be classified into two categories. One is your system software and another one is your application software. So we will discuss each one by one. सबसे पहले है हमारा system software. So software refers to the programs that controls the internal computer system operation and make the best use of the hardware. तो जो कंप्यूटर सिस्टम है आपका वो कुछ नहीं जानता है। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर को हम क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं टू डू द वर्क, और दीज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन थ्रू द सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो दीज सॉफ्टवेयर डैट कंट्रोल्स द इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन, लाइक यू आर फीडिंग द इनपुट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, देन प्रोसेसिंग, देन उसके बाद आउटपुट. All this is done with the help of the system software. So system software further classified into three categories. One is your operating system, then language processor and utility softwares. सबसे पहले है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, आपने सुना हुआ नेम ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर. तो आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम खुद कुछ नहीं करता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर ही करवाता है. ठीक है, डेट सॉफ्टवेयर इज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ जस्ट लाइक द सेक्रेटरी, एज द बॉस गिव द ऑर्डर टू हिज सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी डज ऑल द वर्क फॉर हिज बॉस. द सेक्रेटरी डिसाइड हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू. ठीक है, सेम वी पास द ऑर्डर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम डज फॉर अस. सो द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम is thus to make the computer system convenient to use, and secondary goal is to make the hardware in an efficient manner. So there are many type of operating systems, like your Windows operating system, Linux, Unix, Mac operating system. All this make your computer system run in efficient manner. Next one is your language processors. As the programmers prefer to write these programs in high-level language, but the computer doesn't understand any language other than the machine language. Therefore, it becomes necessary to process a high-level language so that it make to understandable to the computer. So the system program which performs the very job are the language processors. सो बेटा जैसे प्रोग्रामर हैं वो क्या करते हैं, जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, बट कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड दैट हाई लेवल लैंग्वेज, सो इट मस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज. ठीक है, फॉर दिस वी यूज़ द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज. सो वेरियस टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर देयर. सबसे पहले है हमारा assemblers.
This language processor converts the programs written in assembly language into the machine language. So बेटा assembler क्या करता है, convert करता है assembly language into the machine language. Next one is the interpreter. This language processor converts a high-level language program into the machine language by converting and executing line by line. If there is error in any line, it reports it on the same line and program execution cannot resume until the error is rectified. So बेटा इंटरप्रेटर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन. ठीक है, एक एक लाइन को वो कन्वर्ट करेगा. अगर एरर डिस्प्ले होता है किसी लाइन में तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उस एरर को हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करने पड़ेगा. उसके बाद ही प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा. नेक्स्ट वन आर द कंपाइलर. कंपाइलर कन्वर्ट्स द हाई लेवल language into machine language, but the conversion manner are different. It converts the entire high level program in one go and reports all the errors of the program along with the line numbers. So जो assembler है वो भी सेम वही काम करता है, कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज, बट इट कन्वर्ट्स ऑल द प्रोग्राम्स. और जो एरर डिस्प्ले होंगे वो एक साथ इकट्ठे वो शो करेगा विद देयर लाइन नंबर्स. नेक्स्ट वन आर द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. नेक्स्ट है बेटा हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. यूटिलिटीज़ आर द एप्लीकेशंस प्रोग्राम दैट असिस्ट द कंप्यूटर बाय परफॉर्मिंग housekeeping functions like backing up disk or scanning, cleaning viruses. Some important utilities are being discussed below. तो बेटा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आर द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो क्या करते हैं, डेट परफॉर्म्स द हाउस कीपिंग फंक्शन. हाउस कीपिंग फंक्शन मीन्स लाइक बैकिंग अप योर डिस्क. ठीक है, आपकी जो फाइल्स है या जंक फाइल्स है उनको वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा. देन स्कैन करेगा कोई कंप्यूटर में वायरस तो नहीं है. ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. सो सम ऑफ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर, फर्स्ट वन इज़ योर डिस्क फोल्डर फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. सेकंड है हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. थर्ड है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर. फर्स्ट है हमारा डिस्क फोल्डर फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. This utility software is a computer program to organize and keep track of the files and is better than file management software or simply the file manager. Disk utility software lets you to create new files, edit the existing files and save a file. So it maintains hierarchical file system that uses files or the directories to organize files in tree structure. Some of the popular file management software are Free Commander, Explorer++, Pathfinder and Directory Opus. सो बेटा डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है हमारी कंप्यूटर फाइल्स को और ट्रैक करता है हमारी फाइल्स को. ठीक है, उसको क्रिएट करता है न्यू फाइल्स को, एडिट करता है एंड सेव द फाइल्स. ठीक है, इट मेंटेन्स द हायरार्चिकल मीन जो फाइल्स पहले बनी हुई है उनको ट्री स्ट्रक्चर में पेरेंट्स फाइल को पहले रखता है, देन सब फोल्डर्स को अगेन वो क्या करेगा, सब पार्ट्स में डिवाइड करेगा. Next one is your antivirus software. So next one is your antivirus software. So this software ensures virus-free work environment. An antivirus software scans your disk for viruses and remove them if any virus is found. Moreover, some antivirus softwares remain present in the memory all the time so that they can detect the viruses and counter-attack them. So some of the popular antivirus softwares are Norton Antivirus, McAfee Antivirus, Quick एक्स्ट्रा. सो बेटा एंटीवायरस के बारे में तो सबको पता ही है. एंटीवायरस क्या करता है, स्कैन करता है कंप्यूटर को और जो वायरस होते हैं उनको क्या करता है, डिटेक्ट करता है और साथ में उसको काउंटर अटैक या फिर उसे रिमूव करता है फ्रॉम योर हार्ड डिस्क और द कंप्यूटर. So examples of antivirus softwares are your Norton
Antivirus, McAfee Antivirus and Quick. Next one is your encryption and decryption software. Beta, what is encryption? Encryption refers to the conversion of electronic data into the another form called the encrypted form, called the cipher text, which cannot be easily understood by anyone except the authorized parties. बेटा एनक्रिप्शन क्या करता है? एनक्रिप्शन कन्वर्ट करता है जो आपका डाटा है उसको कोडेड फॉर्म में, ताकि अदर पर्सन्स या अनऑथोराइज पर्सन उसे ना पढ़ पाएँ. ठीक है. सो डैट कन्वर्ट्स द डाटा इनटू द एनक्रिप्टेड फॉर्म और कॉल्ड द सिफर टेक्स्ट. So what is ciphertext? Ciphertext is the term used to refer the altered data so that to make the data intangible to unauthorized users. Next है बेटा decryption. Decryption is opposite to that of the encryption. That is converting the ciphertext into the original form using the correct keys. बेटा decryption में दोबारा फिर वो convert करेगा encrypted form को into the original form, that is the electronic data. ठीक है. So some of the popular encryption and decryption softwares are LastPass, then BitLocker, VeraCrypt, 7zip and systematic endpoint encryption. So beta utility software are also known as service programs, or we call it routine tools or utility routines. These are specially designed to help to manage and tune the computer hardware, operating system or the application software perform a single task or a small range of tasks. So this was all about the system softwares. Next we will do the application softwares.